तो चलो मित्रों, आपने 18/8/2018 अंदर रेलवे डी ग्रुपनी अंदर जे सिम्प्लिफाई चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछायो है जेनु अत्यारे आपने सोल्यूशन करवानुं छे। बरोबर। तो जो मित्रों सर्वप्रथम आपने रकम जोईए तो 1/3 -3 घात प्लस 1/5 -4 घात प्लस 1/15 एनी -2 घात। तो जो मित्रों माइनस घात हमेशा माटे ना होवी जोईए। बरोबर। तो एने आपणे धनमा रूपांतर करवू पड़े। तो धनमा रूपांतर करीशुं तो आ अंशनो छेद बनी जशे अने छेदनो अंश बनी जशे। बरोबर। तो चालो मित्रों आपणे सौप्रथम 3 ऊपर लखीशुं ने 1 नीचे अने माइनस घात निकळीने धन थई जशे। बरोबर। चालो ए ज रीतना अहींया 5 ऊपर लखीशुं अने 1 नीचे माइनस घात निकળી जशे एटले 4 ज रहेशे। बरोबर। चालो ए ज रीतना अहींया 15 ऊपर लखीशुं अने 1 नीचे -2 घात निकळीने 2 बनी जशे। चालो 1 નું કોઈ વેલ્યુ નહીં એટલે આપણે 1 ને નહીં લખવું। બરોબર। ચાલો હવે આ 3 ની 3 ઘાત કેટલી થશે તો 3 × 3 × 3 3 × 9 9 × 27 તો અહીંયા આવશે 27। બરોબર। ચાલો પ્લસ 5 ની 4 ઘાત તો 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 25 25 × 5 125 125 × 5 કેટલા થશે 625। બરાબર। ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 15 वर्ग 15 वर्ग કેટલો થશે તો 225। બરાબર। ચાલો હવે આ બધાનો સરવાળો કરીશું 600 ને 700 800 અને આ 25 એટલે 50 અને આ 27 તો કેટલા થશે 877 થશે। બરાબર। આ આપણો ફાઇનલ જવાબ। તો ઓપ્શન નંબર સી।